Good morning students, welcome to Commerce Canpit Odisha. Today we'll start with the remaining part of Indian Contract Act, Impossibility and Force Majeure. ठीक अछि देखो impossibility माने कहले हमर गुटे जिंस एठी आसियो contingency हैला impossibility माने कोन आसियो contingency factor गुडा आसियो contingency factor माने कोन things which may or may not happen impossible वाली केबे हमें कहया हम जतलो जानि थिबा कि से जिंस रे हेबार चांसेस बहुत कम हैला बट हमर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट contingency ये मानुछ कोन मानुछि impossibility रे पाखे पाखे मानुछ हैला से कोन कुछ देखो section 32 of the Indian Contract Act lays down provisions relating to enforcement of contracts contingent on an event happening. It states that the contingent contracts to do or not to do anything based on an uncertain future event happening cannot be enforced by law unless and until that event has happened. If the event becomes impossible, such contracts are void. हैला तो से कौन कहूची contract गुडा अछि contract गुडा से two types classify करछि गुटे से कहूची कोन contingent आउडे कोन directly impossible कहूची directly impossible कहूची बुझि पालो तो contingent माने कोन contingent माने कोन things which may or may not happen हेले से कोन कहूची जानछु ना contingent contracts to do or not to do anything based on uncertain future event happening cannot be enforced by law माने एउडा को केबे enforce हे पारे जानछु ना can only be enforced by law if the event has actually occurred clear माने से कोन कहूची कंटिंजेंट इवेंट्स जोडा कि हेबारो न हेबारो किछि भी ग्यारंटी नै सेउडा को केबे हम कॉन्ट्रैक्ट ता कंसीडर करछि किबा कॉन्ट्रैक्ट बाय लॉ कंसीडर करछि जेतोळ से इवेंट एक्चुअली होछि एक्चुअली जेतोळ से इवेंट ता टेक प्लेस करछि देन ओनली वी आर कंसीडरिंग नले कोन करछु हम सेडा को कंसीडर करू बट इम्पॉसिबल जिंस कोन कॉन्ट्रैक्ट्स आर डायरेक्टली void contracts become void कोन कहूची कॉन्ट्रैक्ट गुडा को void हे अछि impossible contract तुमे जानछ से जिंसरा किमिते ले impossible ali कहिगी तो contract ऑटोमेटिकली कोन हबो void हे जे क्लियर अच्छा एग्जांपल ला देखुछ ना सब होमवर्क जहा भी दिया होची तापर देखो सेक्शन 36 of the Indian Contract Act states that an agreement contingent on impossible events is also void माने देखो से तो फर्स्ट जिंस कोन कहि देला contract गुडा को directly contract तो void हे जिवो but contracts dependent on contingent events are also void बुझि पालो are also void माने contract जोडा अछि सेडा impossible events किबा contingent events ऊपर डिपेंड हे गया अछि माने contingency रो फैक्टर ता जेमिति इन्वॉल्व हेलेले से जिंसडा हमें void कया एदर सेडा कॉन्ट्रैक्ट ता डायरेक्टली contingent हो कि कॉन्ट्रैक्ट विथ एग्रीमेंट भितरे कंटिंजेंट एलिमेंट्स हो जोडा थिलेला हम पूरा जिंसडा कोन कयो void कयो क्लियर तापर देखा if an impossible event happens are void whether the impossibility of the event is known or not to the parties to the agreement at the time when it is made माने से जदी जानि नि कि से जिंसडा impossible ali कहि हेले से एंटर ही होची हला तो जदी एंटर हला पर जदी से जानुची देन आल्सो सेला void ही जिवो जदी जानले तो से एंटर ही न थांदा सेला फर्स्ट रो को void ही जे थांदा कॉन्ट्रैक्ट बट से कोन कहू जदी एग्रीमेंट भीतर को एंटर हला पर दे कम टू नो दैट द थिंग्स आर impossible then also it will be considered void माने एडी गुटे पॉइंट ऐड करियो कोन the factors of impossibility may or may not be
known to the parties to contract, may or may not be known to the parties to contract at the time of entering into the agreement or contract. Clear? माने कंटिंजेंट डायरेक्टली वॉइड हो जिवो जदी कंटिंजेंट वॉइड सॉरी कंटिंजेंट केबे वॉइड होबनी जदी एक्चुअली से जिंसडा माने एक्चुअली अकर हैला देन ओनली सेडा वैलिड होबो कंटिंजेंट किंबा इम्पॉसिबल माने इम्पॉसिबल फैक्टर्स और कंटिंजेंट फैक्टर्स एसोसिएट हेगी थिले वॉइड हो जिवो जदी कॉन्ट्रैक्ट भितर इम्पॉसिबिलिटी फैक्टर्स थिले वॉइड हो जिवो आ ए जिंस उडागो से कॉन्ट्रैक्ट करलाळो जानू न जानू जदी जेतलो जानिबो सेडा ऑटोमेटिकली वॉइड हो जिवो सेति की जिंस एडी मेंशन हिज क्लियर Next जिनसे देखो से कौन कहूची where section 56 of the Indian Contract Act states that an agreement to do an impossible in itself is void माने again impossible जिनसे रो agreement void हबो impossible factors रो agreement contract सब जिनसे जा कौन हबो void हबो तापर देखो से कौन कहूची contract to do and afterwards becoming impossible and unlawful कौन कहूचे contract to do an act contract to do an act contract to do an act afterwards becomes impossible or unlawful. A contract to do an act which after the contract is made becomes impossible or by reason of some event which the promoter could not prevent unlawful becomes void when the act impossible or unlawful. माने ultimately से कौन कहूची act starting रे possible होथिला but afterwards सेटा gradually कौन हेला impossible हे गला किंबा कौन a contract to do an act which after the contract is made becomes impossible hela elements impossible hela kimba contract aga impossible hela or by reason of some event which the promisor could not prevent become unlawful jodi impossible hela unlawful hela सब जिनसे कौन हबो हमर void हबो when the act becomes impossible or unlawful माने contract भीतर को enter हला पर unlawful किंबा कौन impossible हला void हो जिवो जदि कॉन्ट्रैक्ट भीतर एंटर हेबा आगरे एलिमेंट्स गुडा को प्रॉमिसर जाननी बट एग्जिस्टिंग थिला प्रॉमिसर केतोळ जानला एंटर हेला पर जानला माने आगरे जानो पर जानो जेतोळ जानिले से दिनरो सेटा कोन हम वॉइड होबो को दिडा एलिमेंट्स ना जदि अनलॉफुल और इम्पॉसिबल हैला एज सिंपल एज दैट क्लियर दैट an act afterwards becomes impossible or unlawful जदि act अछि act becomes impossible or unlawful अब एटा दी प्रकार हे पारे when the promisor knows it and enters जदि जानि कि से एंटर करछि हला किछि किछि ता पाखरे आईडिया थिला एंटर करछि और unknowingly enters into the contract दीडा जको जिंसो हेला को कोन हबो दीडा जको जिंसो हेला को से जिंसो कोन हबो अल्टीमेटली वॉइड हे जिवो हैला अच्छा ए जो जिंसटा अछि से जानि कि एंटर करछि एली कहिले से जानि छि कोन एडा पॉसिबल हेबार चांसेस अछि एली कहि से किछि फ्रॉडुलेंट इंटेंशन रे विदाउट एनी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन हैला पिला कंफ्यूज हे जांदी एडी विदाउट एनी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन तार फ्रॉडुलेंट इंटेंशन किछि न थाई कि से एंटर होछि ता पर से जानिला हैला तो से कंफ्यूज करके जेतिकी पॉइंट कहि पारियो मु कहि दोछि माने अल्टीमेटली तुमको पूरा आज जेतिकी पढै छि माने एबे जई कोन सिखौछि कंटिंजेंसी रो फैक्टर थाओ इम्पॉसिबिलिटी रो फैक्टर्स थाओ आ कोन अनलॉफुल फैक्टर्स थाओ
जानिकी करू न जानिकी करू एग्रीमेंट एंटर हेबा परे करू आगरे करू जेतोळे भी जानिले एट द पॉइंट दे आर नोइंग इट एट द एंटायर थिंग बिकम्स void हैला लॉ किछि एक्सेप्ट करबन क्लियर देखो compensation for loss through non-performance of act is a fact known to be impossible or unlawful. Where one person has promised to do something which he knew or with reasonable diligence might have known and which the promisee did not know to be impossible or unlawful, such promiser must make compensation to such promisee. Such promiser must make compensation to such promisee for any loss which such promisee sustains through the non-performance of the promise. से कौन कहूची ना फर्स्ट होची कोन एटा ए टॉपिक टा होची कंपनसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल माने से कहूची जदी गुटे एक्ट टा इम्पॉसिबल किबा अनलॉफुल हले से जानिछ हैला फॉर एग्जांपल दीडा पार्टी अछंदी ए एंड बी हैला के अछंदी ए एंड बी ए माने ये होची प्रॉमिसर ये कोन प्रॉमिसियर तो बी जहाँ भी करिछि माने ए जहाँ भी करछि ए जानिनि कि ए जिंसडा परे परे कोन हो अनलॉफुल हे जिवो माने मनरे ये कहिछि कि डायमंड गुडाको तू आनी कि दे मते मु तते एतिकी अमाउंट देबे बट लीगल एक्ट गुटे इमिति माने इंडिया गुटे इमिति एक्ट माने पास कर देला जोडा रे कोन डायमंड गुडाको आनियार गुटे लेवल जे इलीगल मानछ से जिंसडा ये जानि ए जानछि कि से जिंस जानिनि बट बी कोन करछि तापे ऑर्डर करिके आन दैछि ऑर्डर करला से केतिकी अमाउंट आन देथि 50 लाख रुपीस दे दिथो 50 लाख रुपीस जेतु दे देथिबो एबे जदि ये कहियो नाही तो एबे मते दे ना मते प्रॉब्लम होबो तर नॉन परफॉर्मेंस लागि प्रॉब्लम हैला ना नै से मन्ना करिया लागि प्रॉब्लम हैला ना नै हैला ऑब्वियसली तो हेले एडी कोन हबो तो ये किछि कंपनसेशन देबार अछि आकु ऑब्वियसली कंपनसेशन देबार अछि तो से कंपनसेशन ना को जिंस को धरि के हबो सेडा होची एक्ट भितरे कोचन से कोन कोच देखो एबे बडा बुझिबो where one person has promised to do something which he knew or with reasonable diligence might have known माने से जदी एतिकी बड़ कॉन्ट्रैक्ट भीतर को एंटर होची he would have inquired से जानि थांदा ना माने 3-4 मंथ्स पीरियड रे तो एक्ट पास ही जाए ना सो से डायमंड आनी बाको कहूची तो टिके से इंक्वायरी कर थांदा ले भलो ही थांदा इंक्वायरी कर थांदा कोन इंक्वायरी कर थांदा के जिंसडा लीगल लॉफुल अनलॉफुल ना कोन से इंक्वायरी करथाना करी कि जदी माने ताको कहि थांदा तो ए जिंसडा कोन नॉन परफॉर्मेंस हे न थांदा बट जेहेतु से कोन करछि किछि डिलिजेंस न यूज करिगरी किछि डिलिजेंस न यूज करी कोन करछि कॉन्ट्रैक्ट भीतर को एंटर ही होछि तो नॉन परफॉर्मेंस लागि कोन हला हमरो प्रॉब्लम हला ना नै तो दैट्स व्हाई ए इज लायबल टू पे फॉर सम कंपनसेशन तो से कोन करछि देखा might have known and which the promisee did not know promisee को तो जोड़ा नहीं to be impossible or unlawful such promiser must make compensation in such promisee for any loss which such promisee sustains through the non performance of the promise माने entirely non performance हेबा लागि किछि भी जदी इश्यू हला हला किछि भी जदी लॉस ताकू बियर करिबा पे पडिला तो से जिंसो पई ये कोन करे कंपनसेशन देबा पे बाध्य बुझि पालो आई होप इट्स क्लियर डायग्राम कर रेडी promiser without any inquiry and due diligence without any inquiry and due diligence कौन करछि asks for performance which later on becomes what unlawful or impossible then का कहूछि जे प्रॉमिस को कहूछि आ लगी he bears or sustains some loss or expenditure bears or sustains some loss or expenditure the promiser जदि एटा अनलॉफुल और इम्पॉसिबल हबो कोन हबो नॉन परफॉर्मेंस और void हबो बुझला ना नहीं
क्लियर नॉन परफॉर्मेंस और वॉइड हम जेतला नॉन परफॉर्मेंस और वॉइड हैला तो कौन हम आर एक्सपेंडिचर और लॉस टा इनकर करिया बाध्य हैला तो इन दिस केस कौन हम अल्टीमेटली एडी लेखा promiser promiser is required to compensate for loss sustained for loss sustained. Yeah. Hello. How compensate करियो? Promisor is required to compensate for the loss sustained to promisee. एडा मु हैशटैग कोन पे करली दिस इज द मेन जिस्ट ऑफ द एक्ट माने जहां भी से सेक्शन नंबर टा कहूची एडा होची मेन जिंसो बट भीतर हमें कोन कोन लिखुछु कोन सिनेरियो हेले ए जिंसटा हमको एप्लीकेबल हबो क्लियर एमती जदि तमे गोटे गोटे सेक्शन नंबर करी करी के जीव ल काहेंगी तुमको कष्ट लाग्यो लॉ और सिंपल जिंस किछि लाग्यो नै बिट क्वेश्चंस आंसर हे परियो केस लॉस आंसर हे परियो आ जो थियोरेटिकल क्वेश्चन उडा तो आसी सेटा तो डायरेक्ट क्वेश्चन माने तुम जदि कंसीडरेशन रो डेफिनेशन टा लेखिया पे कहूची इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन देयर आ जदि तुमको लेखुची एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन से उडा तो जे ना आंसर करि परियो बट एडा कोन करियो एडा जदि तुम प्रेजेंटेशन एमती करदेलो हला गिवन रे पिला ने कोन करंती गिवन रे डायरेक्टली कोन लेखाइ छि क्वेश्चन रे सेमती सेमती लिखि दियंती जदि तुम एमती एक्सप्लेन करि के लिखि दोछो तम पे भी इजी होबो एंड एग्जामिनर को गोटे इंप्रेशन मिलियो कोन क्वेश्चन से बहुत भल से बुझिचे तो व्हाटएवर ही और शी इज आंसरिंग इट्स ऑफ बेस्ट कोन बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज बुझि पालो तो ए जिंसटा प्रैक्टिस करियो बुझिला तो एडा आ ए पार्ट जहां भी अछि हमें लाइक लास्ट काली एंड आज जो पढ़छे एडा पूरा नुवा इंट्रोडक्शन हेची देयर आर मोर चांस ऑफ गेटिंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस पार्ट काहेकि जे तो नुवा पार्ट ता पिला ने एडा देखुंदिनी पिलाने बुझंदिनी तांके जहां भी फाउंडेशन भीतर पढ़छनी सेटा रिवाइज करके पढ़ांदी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखो बुझो बीकॉम रे भी पढ़ा होची फाउंडेशन रे भी थाउची इंटरमीडिएट थाउची फाइनल रे भी सम एलिमेंट्स आर देयर सीए रे भी अछि तो समस्त डिफरेंस कोन जहां भी से माने गोटे स्पेशल जिंस रो इंट्रोडक्शन करथिबा ना क्लियर तो देखो से इलस्ट्रेशन गुडा को कहिछि इलस्ट्रेशन ना नॉट सो इंपोर्टेंट माने ए विषय बेसिक किछि ये है नी माने इंट्रोडक्शन किंबा बेसिक किछि एक्सप्लेनेशन दिया है नी बट सिंस इट्स गिवन वी विल जस्ट डिस्कस इट ठीक अछि Anil and Sunil entered into contract where Anil promised to deliver 100 laborers for building his house. Anil कोन Anil is the promiser here केमति लेखिबो मु कहूची प्रेजेंटेशन दा Anil is the promiser here आ के Sunil is the promisee हला हला कोन प्रॉमिस हेची deliver 100 laborers for what for building his house purpose jaha bhi he pare at the time of making the contract they included the clause force majeure but Anil could not deliver the laborers to Sunil due to COVID-19 lockdown under the situation Anil is under no obligation to perform the contract justified कौन पे होनी एटा कोविड-19 टाइम रे गोटे सर्टेन सिचुएशन क्लॉज ता एंड इंट्रोड्यूस हेची जोडा कि से पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे इम्प्लिकेबल थिला इट्स नॉट अगेन इम्प्लिकेबल एबे ए रीजन दा से आउट दे पारियोनी कोविड-19 लॉकडाउन पीरियड रे जहां चलतिला बिकॉज देखो कोविड-19 भितरे बहुत किछि एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स भितरे हम एंटर हेथिबो तो से फेज ऑफ पीरियड रे से कॉन्ट्रैक्ट उडा किमिति डील होथिला सेडा पे एडा गुडा एग्जांपल देखो force majeure clause is a ground for avoiding obligations emanating out of a contract due to circumstances that are out of control of either of the parties तो एबे एडी लिखो force majeure रो मीनिंग कोन as per the act से कोन कहू जति कि से कहू सेति कि एना हमको इंट्रोडक्शन क्लॉज की क्लॉज भीतर को जस्ट जाने वाला किछि दरकार नै से कहू कोन इज अ ग्राउंड माने कोन मेजर्स माने situation in which the rights and liabilities of the parties to contract are
compromised are compromised due to unavoidable phase or circumstances. Clear? बुझिपाल तो pandemic was one such instance. Example लिखिए example is COVID-19. Force majeure simple language रे मोर तारा definition टा लिखेली ground or situation in which the rights and obligations or rights and liabilities of the parties are compromised. तांकर हातरू पळेला कोन पई ना unavoidable circumstances. इमिति किछि situation आसिला जोडा कि out of control थिला. जेतु सेटा out of control थिला तो तांकर rights, liabilities, obligations सब गुडा कोन हला completely compromise हेला. एटा गुडा अंडरलाइन करो. The term force majeure is not defined anywhere in the Indian Contract Act. काहेंगी इट्स एन इमरजेंसी क्लॉज. ऑब्वियसली जिनस गुडा आउट ऑफ कंट्रोल हेले से क्लॉज टा इंट्रोड्यूस करायला. तो जदी आउट ऑफ कंट्रोल हेला पर हेला तो कॉन्ट्रैक्ट हेला को थोड़ी ए बिसरे माने जहां भी तांके कहितबे हेला ना. तो से अल्टीमेटली कोन कोछ देखो द पैंडेमिक वाज वन सच इंस्टेंस when most contracts could not be completed due to the sudden lockdown leading to the invoking of force majeure clause. The lockdown was pursuant to the directions by the government. However, many events take place that cannot be controlled. That in turn may lead to impossibility of performance of contracts. So, कौन कोची events take place that cannot be controlled. जोड़ा कि lead to impossibility of performance of a contract. Thus, under Section 56 of the Indian Contract Act, it now becomes impossible for either party to perform its obligations, thereby making it void. So, ultimately, आरा कौन? So, then Section 56 of the Indian Contract Act. Section 56 of the Indian Contract Act gets attracted here since it now becomes impossible for either party to perform its obligation, which becomes void. आमे पढ़थिलु impossible events are always void. So this section of the Indian Contract Act gets attracted here since the events are ultimately impossible. Making it what? Void. Here, making it void. This is the concept you need to know about force majeure. I hope it's clear. ठीक अच्छी. Now the next topic is termination by novation. Termination by novation. देखो. Section 62 of the Indian Contract Act lays down the effect of novation, rescission, alteration of the contract. It states that if the parties to a contract agree to substitute a new contract for it or to rescind or to alter it, the original contract need not be performed. से कोची कोना termination by novation. माने से कोची कोना केतिकी जिंस अछि से गुटे नुवा पॉइंट गुडा कहिछि novation, rescission and alteration. ए तीनटा पॉइंट कोना मे देखिबा. बट ए तीनटा पॉइंट से गुटे जिंस कहिछि कोना when गुटे नुवा कॉन्ट्रैक्ट ता सब्स्टिट्यूट करछि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को. माने एडा होछि हमर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट. ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एडा हैला. This contract is substituted with a new contract. Substituted with a new contract. Hello.
जदि एटा सब्स्टिट्यूट हे होची नुवा कॉन्ट्रैक्ट रे द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट नीड नॉट बी परफॉर्म आ जदि एटा सब्स्टिट्यूट कर दोची माने पूरा पूरी रिप्लेस कर दोची ना नहीं आ जदि सेटा रिप्लेस कर दोची तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट ता परफॉर्म करियार दरकार भी नहीं क्लियर देखो एग्जांपल जैसे कोइछि गुटे राम और श्याम सम मनी अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट हला ओस माने कोन लायबल लायबिलिटी अछि एडी यो जे तो लायबिलिटी अछि इट इज agreed between Ram Shyam and Kiran that Shyam shall henceforth accept Kiran as his debtor instead of Ram हला से कोन होछि डेटा तो रिप्लेस करि दोछि the old debt of Ram to Shyam is at an end and a new debt from Kiran to Shyam has been contracted obviously से कॉन्ट्रैक्ट ना काटी के लिखि देबो ना कोन से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करी कि नुवा कॉन्ट्रैक्ट ता एंटर कर हला this is somewhat alteration रो केस था then से कोछि कोन A owes B 10,000 A enters into an arrangement with B and gives B a mortgage of A's estate for 5,000 in place of debt of 10,000. This new contract and extinguishes the old. बुझला? Then से कुछ देखो to fulfill section number 62 the requirements are that there must be a meeting of minds market number 1 and there must have been a pre-existing contract would a pre-existing contract between the parties which has now been terminated so terminate he jaithibo ebe in the case of Lata Construction and Ors versus Dr. Ramesh Chandran Ramikal Shah the court held that the novation of a contract leads to substitution of a new contract for the old contract so novation mane kono substitution of new contract for the old contract such a substitution leads to the discharge of old contract which no longer has to be performed hela obviously seda kochi mane novation ro exact meaning hochi substitution of a new contract for the old contract substitution mane kono exactly jodi kiछि elements replace होची किछि elements change होची तो old contract ता पूरा पूरी replace हे जिवो पूरा पूरी substitute हे जिवो with a new contract तो जदी new contract सहित सेटा replace हे जोची old contract need not be performed anymore ठीक अछि तापर से कोछि a contract of novation requires a party to agree extinguish or discharge its obligation or debt unless this has been accomplished there can be no novation में से कौन कोछि first thing होछि contract for novation requires a party to agree to extinguish or discharge obligations or debt माने novation रे से कौन points कहला हमको first thing होछि novation रे meaning कौन को substitution of a new contract for a old contract substitution of a new contract for a old contract अच्छा novation रे से कोची एडा सेतळ हे पारियो जेतळ को parties agree for what से कोची तीनटा जिंस extinguishment of rights extinguishment माने शेडिंग ऑफ जहां भी हां हला ना माने ता हातुर से राइट टा पळेबो एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स एंड डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज ए दीडा जिंस हेले आगा नोवेशन रा टेक प्लेस करि परिबो हला जदि तांका नै माने राजी नाहंती कि कोन तांके राइट छाडिबे और लायबिलिटी टा लाइक ट्रांसफर करबे दीडा जिंस रा एग्रीमेंट आगा नै तांके एग्री आगा करनांदी तो नुवा कॉन्ट्रैक्ट रेडी आसीबार चांस नै तांके सेतोळा तो सब्स्टिट्यूट करि परिए ओनली व्हेन दीस पीपल आर एग्रीइंग टू डिस्टिंग्विश द राइट माने तांके पूरा पूरी तांको राइट छाडिबा पे रेडी अछंदी देन ओनली से जिंसडा हे परिबो क्लियर अच्छा ए जो जिंसडा अछि एडी सेक्शन 62 रो इंटरफियरेंस केबे आसियो interferes only देखो number 1 when there is meeting of mind माने कोन same in the same sense बुझि पाछ तो लिंक करि पाछ तो same thing in same sense इति लेखिबो तमर डिवाइस दिबो माने आगरे meeting of mind रो मीनिंग ता एडी मन पड़ जबो second thing होची there must be
there must be a pre-existing contract. There must be a pre-existing contract plus now terminated. Now terminated. ବୁଝିପାରିଲ section 62 ର interference ସେତେବେଳେ ହେଇପାରେ ଯେତେବେଳେ there is a meeting of mind and there is something in common between these two parties and there is a pre-existing contract माने a contract must have existed जोड़ा कि एबे नाही आगरे गोटे कॉन्ट्रैक्ट थिला जोड़ा कि एबे कैंसिल हैला सेतेବେଳେ आगा section 62 रो इंटरफियरेंस ता हेई पारे क्लियर एंड और लिखिबोनी प्लस लिखिबो नले कोन और लिखिबो प्लस लिखिबो तो तुम मन रहबो कि दिस इज एन इक्वेशन दीडा जा जिंस हेले आगा हेई पारे एंड तुमको स्ट्राइक हबन से लास्ट मोमेंट रे एंड जहा किछि भी तुम नोट्स बनोचो यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम माने जदी काली एग्जाम हेले ए नोट ता मते एबे सैटिस्फाई करि पारिबो कि विल आई बी सैटिस्फाइड विथ स्टडीिंग दिस थिंग्स बुझिला काहेकि मोर जेतिक सानो थियो सेते कॉन्फिडेंस मोर बढ़िबो कि लाइक मो सब जिंस रिवाइज करि कि तो आई कैन परफॉर्म बेटर एट एन एग्जाम रे हला दी प्रकार लोक आगा थांदी कौन ना जे पढ़ी के आसते न पढ़ी आसथिबो एंड मोस्ट प्रोबेबली 90% आर फ्रॉम सेकंड कैटेगरी केबे भी किएले पूरा जिंस पढ़ी के जाई परिबन बट व्हाट मैटर्स इज आ जदी पढ़ी के भी जे जाईथिबो ताके जदी सेठी से मन पड़लानी तो किछि लाभ नै दी जन जाको सेम कैटेगरी हे जिबे सेतळो सेडा मन पड़ियोनी पढ़ी के जो न पढ़ी के जो जदी मन पड़लानी सरला जदि न पढ़ी जिबा लोक से जिनसरा स्ट्राइक हेला तो तार सेठी मार्क मिलबो बुझिला ना तो जिनस होची अल्टीमेटली तमर माइंडसेट कोन अछि एग्जाम वालो कॉन्फिडेंट अच्छो ना कोन अच्छो क्लियर For example, in a lease agreement, when the tenant gives the lease to another party and makes him responsible for the obligations and responsibility arising from lease agreement, हैला से गोटे एग्जांपल डाइडी आनी दोची कोछि लीज एग्रीमेंट रो जहा किछि हमर पॉइंट ओडा अछि बहुत किछि अल्टरेशंस हेई थाउ बिकॉज़ लीज इज जनरली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 5-6 इयर्स को हेला को मे बी जा सो तो एग्रीमेंट हेछि से तार कोन कमा पितरो से पड़े परियो कमा हे परियो तार कि एक्सीडेंट वगैरह हे परियो जहा किछि भी हे परियो तो से प्रॉब्लम डा ओवरकम करिया पे कोन इनोवेशन रेस्टन अल्टरेशन रो कांसेप्ट ओडा आसुछि many kind of special contracts can be terminated and the Indian Contract Act also enlists the authorities who have the power to terminate such contracts hela se kon kochi authority bisare kochi who have the power to terminate such contracts can also be terminated between parties by rescinding them hela rescission under contract law means a party to the contract can cancel or terminate the contract rescission mane kono spelling da dekho rescission ro meaning kono contract means a party to the contract can cancel or terminate the contract. A party to the contract can cancel or terminate what? The contract. Clear? Clear? कौन हे परियो कैंसिल हे परियो किंबा टर्मिनेट हे परियो then se kochi kona parties can also legally terminate a contract by mutual consent hela se kochi kona eti one of the party a party koichi mane one of the party all parties can also can mane kona eta cancel or terminate same jinse likhibo by what mutual consent दी जण गोटे म्यूचुअली गोटे अंडरस्टैंडिंग को आसी से जिनसटा कोन करि पारे कैंसिल करि पारे हैला क्लियर फाइन as per section 64 consequences of rescission of voidable contract has been laid down it states that when a person at whose option a contract is voidable rescinds it
The other party thereto need not perform any promise therein contained in which he is promiser. The party risking avoidable contract shall, if he has received any benefit thereunder from another party to such contract, restore such benefit so far as to the person from whom it was received. ए जिनसटा कैंसिल हे गला तो कैंसिल कोर्स दिया जिनसे कोच जदि किछि स्टार्ट हेनी there has not been any start of the promise माने जहाँ किछि भी promise और किमा कोन जहाँ भी सब्जेक्ट मैटर अछि एग्रीमेंट रो भल से बुझ जहाँ भी एग्रीमेंट भीतर सब्जेक्ट मैटर टा अछि सेटा किछि भी स्टार्ट हेनी किमा कोन there has been the promise has been partially started. The promise has been partially started. Hello, धीरे से जिनसो हे पारे जदि there has not been any start of the promise जदि किछि स्टार्ट हेनी तो कोन हबो need not perform anymore but the promise has been partially started तो कोन हबो has to restore the benefit हला जहा किछि भी जे भी बेनिफिट पाइ चली गले सेटा कोन एक्सचेंज हे जिवो किबा रिटर्न हे जिवो क्लियर बुझि पारलो तो जदि किछि स्टार्ट हेनी तो नीड नॉट परफॉर्म इट अगेन पर किछि परफॉर्म करिया दरकार नै जदि किछि स्टार्ट हेछि पार्शियली किछि बेनिफिट उडा स्टार्ट हे जिछि तो जहा किछि भी बेनिफिट तांकाने पाइ छथि सेटा कोन रिटर्न बैक करिबा पे पड़ क्लियर एडा होछि हमर रेसिशन क्लियर देखो Section 66 of the Indian Contract Act lays down the mode of communicating or revoking rescission of voidable contract. The rescission of voidable contract may be communicated or revoked in the same manner and subject to the same rules as applied to the communication or revocation of a proposal. माने से कौन कहूची सेक्शन 66 ता खाली कहूची कि से जिंसडा केमती कम्युनिकेट करिया माने जदि से चाहूची से जिंसडा पूरा कैंसिल करिया टर्मिनेट करिया तो को मोड्स थिबो हमरो सेडा जणया As per section 75, party rightfully rescinding contract is entitled to compensation. जदि से कैंसिल करूची हेले ताको जदि कैंसिल करछि ना ता पखरे गुडे वैलिड रीजन थिबो जा लगी से कैंसिल करछि तो जदि से वैलिड रीजन अछि देन he is liable to receive some compensation ता पखरे राइट अछि compensation डिमांड करिया जदि तार किछि बोल नै माने अदर पार्टी रो किछि बोल नै एंड जदि ये कैंसिल करछि ता आडरू तो देन ही इज लायबल टू पे कंपनसेशन माने अल्टीमेटली गुटे जिंस कोछि कोन जार तार जदि ठीक ठाक माने ता आडरू देखिलाडू से जिंसटा ठीक अछि देन कैंसिलिंग ही इज कैंसिलिंग इट तो से कंपनसेशन मांगी पारिबो जदि तार किछि बोल न थाइ कि ये ता इच्छा रे बिजा लाइला ले कोइ जदि कैंसिल कर दोछि देन ये ताको कंपनसेशन देबो बाध्य हला तो बिजा लाइले कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हे पारियो कोन भूल थिले कैंसिल हे क्लियर A person who rightfully rescinds a contract is entitled to compensation for any damage which he has sustained through the non-fulfillment of the contract. Already discuss हेची point टा माने non performance लागि जदि किछि loss होची किबा किछि expenditure already incur हि जेछि then he is liable for compensation. Clear? Then देखो tender procedure of government contract एउडा को जहा भी अछि सब नुवा इंट्रोडक्शन हेची हला एतरे किछि किछि पॉइंट अछि जोडा तमरा एग्जाम रो आसी परिबो यू हैव टू केयरफुली फिल्टर आउट दोस पॉइंट्स हला जेतरो तुम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढिबो बे बसिबो एग्जाम आगरे तमे ए जो क्वेश्चन आमे ए जो चैप्टर उडा अछि से चैप्टर जहा भी हमें हाईलाइट करिकि सेपरेटली लखिछु से उडा को फर्स्ट देखिबो देन यू विल गो विथ द रिमेनिंग पार्ट ठीक अछि Essentially, a tender is construed as an invitation to an offer which invites bids from various contenders. Tender meaning कोन देखनि टेंडर रो मीनिंग होची इनविटेशन टू एन ऑफर नै इनविटेशन टू एन ऑफर माने कोन टेंडर पकोचु कहउचंदी कोन पकोचंदी ना बिड करचंदी आमे गुडे कॉन्ट्रैक्ट नउचु गुडे बिल्डिंग टा बनेया पई तापे टेंडर उडा को रिलीज हेची टेंडर रिलीज हेची माने कोन सी कोन कोट करबो ना सबुडु कम रेट जोडा कि तुम बिल्डिंग टा पूरा क्वालिटी सहित बनेकी दबो These are the tenders there. माने से कहियो कोन 30 लाख रे हमें बनेकी देबो 25 लाख रे बनेकी देबो जा कॉस्ट कम अछि तार टेंडर कोन हबो एक्सेप्ट हबो बुझला इनविटेशन टू एन ऑफर कोन which invites
पोटेंशियल बिडर्स बिडर्स माने किए जेगी बिडिंग करिवो बिडिंग माने कोन दे विल कोट अ प्राइस जेगी गुडे प्राइस कोट करचंदी जोडा की धरि कोन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हबो किबा रिजेक्ट हबो ठीक अछि These bids are then construed as an offer which when accepted becomes a contract which is binding on both parties equally. तो bidders जे भी अछन ताके कोन करिए bidding करिए हैला तो एडा कोन हबो ए bid when finalized मु जेमिति लेखुची फ्लो चार्ट सिमति लेखो बुझबो bid when finalized this is invites bid when finalized becomes an offer bid when finalized becomes an offer आमे स्टार्ट करथिलो ऑफर पढिबा प्रॉमिस ऑफर से उडारे बट से कोची कोन जदी गवर्नमेंट थ्रू रे गुटी टेंडर टी आछि तो ऑफर पर्यंत रीच हेबा पे हमर प्रोसेस कोन फर्स्ट थिंग होची से इनविटेशन टू ऑफर करिवो गवर्नमेंट इनवाइट करी ऑफर उडाको पोटेंशियली जे रेडी अछंदी बिडिंग करिया पई दोस पीपल विल कोट सम प्राइसेस ताके कोन करिए किछि किछि प्राइसेस कहबे आ से प्राइसेस गुडाको जेतलो एक्सेप्ट हे गला सेडा हबा हमर कोन ऑफर बुझिला आ जदी सेडा ऑफर हैला कोन हबो दे आर binding on both the parties equally binding on both the parties binding on both the parties equally clear binding on both the parties equally बुझि पालो These contracts are usually for the purpose of executing specific work or supplying commodities within specified time schedules. Generally, good example हम ने लोगों ना building डा बने आपे जहाँ भी contract उड़ा को tender उड़ा दिया हो. A tender document may also be called as request for tender. Please underline. Very important mark करो. इमिति एका bit questions आसे तुमको माने पूरा कौन रो गुटे important point से बाहर करे. हैला tender document माने जहाँ भी डा हबो tender document tender document is also known as what RFT किंबा request for tender नॉले तुम कौन जानछ ना से पचारे RFT stands for directly पचार दबो request for tender directly 1 mark question किंबा 2 mark question रे पचार दबो जानना तो 1 mark कोन 2 mark सब खाली आपको ताकू पचारथि अछि ना का वेलेडा स्ट्राइक होबनी रिक्वेस्ट फॉर टेंडर क्लियर दिस डॉक्यूमेंट यूजुअली कंटेन्स द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द वर्क कौन रहियो फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज स्पेसिफिकेशन ऑफ द वर्क टू बी कैरिड आउट और गुड्स टू बी सप्लाइड टाइम लिमिट फॉर फुलफिलमेंट वर्क एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कौन रहियो पिले माने देखै थ्री आरएफटी भितरे कौन रहियो फर्स्ट थिंग होची स्पेसिफिकेशंस फॉर द वर्क specifications for the work to be performed specifications of the work to be performed तापरे कोन goods to be supplied goods to be supplied तापरे time limit for performance of work time limit for performance of work last thing ho jayega okay conditions of the contract conditions of the contract RFT टा तमरो फुल फ्लेज 2 मार्क्स की 3 मार्क्स क्वेश्चन भी हे पारियो हैला व्हाट डू यू मीन बाय RFT एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स सिंपल जिनसटा बट जे तो के जानिनी तो सेटा प्रॉब्लम हे पारिबो हैला टेंडर डॉक्यूमेंट इज आल्सो नोन एज RFT टेंडर डॉक्यूमेंट माने कोन जथरे तमे टेंडर टा पठेबो भल से सोना सेटा टेक्स्ट बुक रे नै टेंडर डॉक्यूमेंट रो मीनिंग होची द डॉक्यूमेंट इन व्हिच यू आर स्पेसिफाइंग अबाउट योर टेंडर जहा किछ भी गवर्नमेंट रो ऑफर आछि से ऑफर को तमे एक्सप्लेनेटरी मैनर रे ताको पठोचो सेथे थिबा हमर चारटा कंपोनेंट्स
फर्स्ट थिंग होची स्पेसिफिकेशंस फॉर द वर्क टू बी परफॉर्म माने कोन म एटार एक्सप्लेनेशन लिखोची बिकॉज देखो एटा क्वेश्चन आसीपर किछि लाइक इम्पॉसिबल जिंस नै आसिले आसी पारियो ताको सरकार गुटे एमिति क्वेश्चन जोडा कि पिला ने बिल्कुल भी जान नथि बिल्कुल भी देखि नथि the explanation of how the work is to be performed as per government order को देखि कि आम कंपनी बेसिकली केमिति से वर्क टा परफॉर्म करिवो से जिंसर स्पेसिफिकेशंस आमे देबा एथिरे सी गुड्स टू बी सप्लाइड हैला the different flow of goods from company to government or vice versa. The explanation of how the work is to be performed as per the government order. The different flow of goods from the company to government or vice versa. जदि company government को ए भितरे किछि goods supply करियर अछि किबा government रो किछि goods demand करिवार अछि तार work perform करिया पई how will he do that से केमिति करबा को time period भितरे ताको goods दरकार सेडा. Then time limit for the performance of work. Time probably quoted for finishing the work. जहाँ भी वर्क स्पेसिफाई हेची से वर्क टा फिनिश करिया पे जहाँ भी टाइम से नबो वाली कहछि माने जदी देखो टेंडर किमिति एक्सेप्ट हबरे टाइम जते कम रहियो आ टाइम जते कम हमें नउचो कॉस्ट केते कम हमें माने बिड करछु से दिना जिंस को मिक्स करिया का टेंडर टा एक्सेप्ट हबो तो टाइम लिमिट हमें कोड करिया दरकार ना नै एग्जैक्टली डेज एंड मंथ सहित हमें कोन करे अछि टाइम लिमिट टा कोड करिया अछि आ जदी बेटर हबो कोन जदी टाइम लिमिट टा मेंशन कर देबो कि जदी बिल्डिंग टा एमिति अछि तो बिल्डिंग रो जहाँ भी माने मेजरमेंट वगैरह ए टाइम पीरियड भितरे हे जिवो देन कोन बिल्डिंग रो स्टार्ट टा ए टाइम पीरियड भितरे हबो आ कोन लाइसेंसिंग टा ए टाइम पीरियड भितरे हबो इमति कहि कोन हम जदी कोड कर देबा देयर विल बी मोर स्पेसिफिकेशन देयर आ चांसेस अछि कोन हम बिड टा एक्सेप्ट हेबा तमेले फ्यूचर रे बिडिंग करिवो 3 crores 2 crores हमरो जहाँ भी बिड जोड़ा नहीं बिड करियो हला सीएमए हेथिबो बिडिंग करियो से तळको एचे सब ध्यान दबो टाइम कम करियो किंदी करियो conditions of the contract एथरे कोन रहियो the different conditions laid down that has to be followed in the process of contract completion. Clear? In the process of contract completion. एडागो टेक्स्ट बुक रे दिया है नहीं बट इन केस जदी से एक्सप्लेनेशन मांगी दोचे तो तमे एमती सेव पर सेशन पे एमती लिखि पारे. क्लियर? I hope it's clear. ठीक अछि एउडा को निजे देखिबो हला all unimportant points but general financial rules by the Department of Expenditure Ministry of Finance are the compilation of rules and orders of government हला next जिंस मिलला कोन GFR next thing होची GFR GFR meaning कोन general financial rules
एगुड़ाक ए चैप्टर टा बिट क्वेश्चंस पाई मते बहुत इंपोर्टेंट लाउची जनरल फाइनेंशियल रूल्स एटा इंट्रोड्यूस हेतिला लाइक 2017 रे this is governed by what? Department of Expenditure, Ministry of Finance. Department of Expenditure, Ministry of Finance. Department of Expenditure, Ministry of Finance. हला GFR भितरे कौन जिनसे आसुची देखो compilation of rules and orders of Government of India. Compilation or summation of what? Rules and orders of Government of India. एटा का पे हेची देखो फर्स्ट हमें जानले कोन जनरल फाइनेंशियल रूल्स माने कंपाइलेशन और समेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस रूल्स एंड ऑर्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हला ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहां भी रूल्स कोची सेटा समस्त पे इक्वल नथिबो का पे कोन अलगा स्पेसिफिकेशन थिबो तो एटा का पे हेची सेटा हमें देखिया टू बी फॉलोड with all matters to be followed by all while dealing with matters involving public finances देखो का सहित एटा हबो public finances सहित these rules and orders are treated as executive instructions to be observed by all departments and organizations under the government and specified bodies except otherwise provided for in these rules तो से कौन कहूची compilation or summation of rules and orders of government of India to be followed by persons, institutions, and other corporate bodies while dealing with public finances. Clear? पब्लिक फाइनेंसेस सहित डील करला बेलू जहाँ किसी भी मैटर्स रो इन्वॉल्वमेंट वगैरह अच्छी से जिनसर कौन रूल्स आमे देखिकी जानिबा तो एटा स्पेसिफिकली पब्लिक फाइनेंसेस को मेंशन करिया पई कराइछ क्लियर देन से कोचे कोन देखो The GFR outlines the procurement of procedure, contract management and financial management principles. Under Chapter 6 GFR 2017, procurement of goods and services has been discussed. Additionally, delegation of financial power rules along with GFR 2017 deals with governmental procedure, deals with what? Governmental procurement and governmental procurement contracts. Apart from GFR 2017, there is no central legislation that governs the governmental procurement and contract for tender in India. Every state has its own rules and guidelines with respect to government procurement contracts based on broader principles of GFR 2017. से ए विषय किछि भी माने डिटेल इन डिटेल एक्सप्लेनेशन किछि देनी खाली तमे एति कि जानियो कोन पब्लिक फाइनेंस जहां भी माने मनोरो गुडे पब्लिक इंस्टीट्यूशन पे किबा पब्लिक वर्क पे जहां किछि भी तमो फाइनेंस दोची एंड सेटा मैनेज करिबार अछि मे बी सेटा इंडिविजुअली गुडे पर्सन भी करू गुडे कॉर्पोरेट बॉडी भी करू गुडे एंटिटी करू गुडे फर्म करू सेमान को सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करियार अछि रिगार्डिंग व्हाट प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स हला जहां भी मूवमेंट ऑफ गुड्स अछि सेउडा को धरि की स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करियार अछि क्लियर Rule 144 of GFR by the Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India lays down the fundamental principles of public buying for all procurement including procurement of work. Hello, section 144 ta kon kochi na fundamental principles of public buying. Hello, section 144 hochi relates to procurement of public buying
देखो एटा रीडिंग आगे एसेंशियल अछि रीडिंग जहाँ पॉइंट्स हम मेंशन करबी अंडरलाइन करिया पई कही यू हैव टू डू दैट ठीक अछि जहाँ भी हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे इंपोर्टेंट सेटा मैं लिखे देछि ऑलरेडी एटा हमर रीडिंग पर्पस पे इंपोर्टेंट हैला देखा every authority delegated with the financial powers of procuring goods in public interest shall have the responsibility and accountability to bring efficiency, economy and transparency in matters relating to public procurement for fair and equitable treatment of suppliers, promotion of competition in procurement. Ultimately से कौन कहूची हमको efficiency in economy एफिशिएंसी इकोनॉमी एंड ट्रांसपेरेंसी तीनटा जा जिंस ऊपर ध्यान देबार अछि माने कोन जहां भी काम होची सेटा जदी गुटे प्रिंसिपल्स को बेस करिकि होची देन दीस थिंग्स विल बी कैरिड ऑन एफिशिएंटली माने तर एफिशिएंसी बढ़ियो क्वालिटी ऑफ डूइंग द वर्क ता बहुत बढ़ियो देन सेकंड थिंग होची कोन हमरो ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी माने किछि जिंसर लुचा लुची रहबन माने हमको थिबो कोन गुटे पर्टिकुलर जिंसडा किमिति होची कोन होची सेटा जानि कि जदी माने वर्कआउट करूचंदी जदी जानि कि ये करूचंदी देन कोन हबो देन से जिंसर ट्रांसपेरेंसी टा मेंटेन हबो माने केतिकी जिंसो कहिबार अछि केतिकी जिंसो कहिबार नाही सी दीडा जिंसो भितर जकर बाइफरकेशन टा रखुची देन कोन लोक एडा लुचिया पे डरिबे लीगली तांके चाहउचंदी कोन एतिकी जिंसो जेमति हले मेंशन हबो अले कहिबे जति मेंशन हबो अले तांके जानचंदी तो सेतिकी जिंसो भितर हमर कोन ट्रांसपेरेंसी टा रहबो क्लियर तो एडा को विषय हबो ना पब्लिक प्रोक्योरमेंट आउट ट्रीटमेंट ऑफ सप्लायर्स कंपटीशन मार्केट भितर जहाँ भी कंपटीशन हमर होची सप्लायर मानक भितर जहाँ भी हमर इफेक्शन रहबो पड़ची माने कोन से मानंगर कोन जहाँ भी माने कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन रहबो पड़ची गुटे सप्लायर पाखरे नले आउडे सप्लायर राखिबो एम्ति जिंस कोन इंकरेज करबन से सब जिंस इरेडिकेट करिया पे ए सब रूल्स ओडा आनचन The procedure to be followed in making public procurement must conform the following yardsticks. Yardsticks माने measures. Measures. ठीक अछि. The description of the subject matter of procurement to the extent practicable should be objective, functional, generic, measurable and specify technical, qualitative and performance characteristics. माने कोच objective माने होची be objective माने होची to the point. Second thing होची functional माने कोन related to the functions they are performing. हला जहाँ किछि भी तांकर functions oriented rules गुडा को कयार अछि. Generic माने कोन maintain identity. Then होची कोन measurable माने कोन तांकर जहाँ भी परफॉर्मेंस अछि इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ मेजरिंग हला माने कोन आमे जदी पॉइंट्स दोचु रेटिंग दोचु तो सेडा कोन गुटे मेजरमेंट प्रिंसिपल ना नै हला तो एडा केमति हबो ना तांके केतिकी सप्लाई करचंदी केतिकी टाइम पीरियड भितर सप्लाई करचंदी रेटिंग केमिति अछि कोन अछि सब जिंस एडी मेजरेबल क्लियर नॉट इंडिकेट अ रिक्वायरमेंट फॉर particular trademark trade name or brand एमति नै कि पर्टिकुलरली कोन ट्रेडमार्क ट्रेड नेम एडा को मेंशन करिबार अछि हला the specifications in term of quality type etc as also quantity of goods to be procured should be clearly spelled out keeping in view the specific needs of the procuring organizations. The specifications so worked out should meet the basic needs of the organizations without including superfluous and non-essential features which may result in unwarranted expenditure. तो गोटे जिंस देखो unwarranted expenditure should be controlled. किछि unwarranted expenditure माने होछि किछि दरकार नथिबा expenditure उडा हेले स्पेसिफिकेशन टा केमिति मेंशन हबा क्वालिटी टाइप एंड क्वांटिटी तीनटा जाको जिंस स्पेसिफिकली मेंशन हो को क्वालिटी ऑफ गुड्स हम सप्लाई करछु इज इट 24 कैरेट गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड को क्वांटिटी रे हला को क्वांटिटी रे जनरली पीपल आर टेकिंग क्वांटिटी जदी बेसी नउचंदी कोन डिस्काउंट अछि की देन कोन टाइप ऑफ गुड्स वी आर मेंशनिंग एंड हला ना बुझला गुटे गुड्स रो केतेटा टाइप थिबो से टाइप अंडर सब क्लासिफिकेशन रो क्वालिटी थिबो तर प्राइस थिबो क्वांटिटी केते डिमांड होची सेटा थिबो क्वांटिटी केते हम सप्लाई करि पारो सेति की थिबो सब जा जिंस कोन क्लियरली स्पेल्ड आउट क्लियरली एक्सप्लेन हेबार अछि then where applicable the technical specification shall be to the extent practicable based on national technical regulations or recognized national standards माने से कुछ कोन recognition थिबा technical regulations माने जदी हम accounting follow करछु तो we are following accounting standards auditing करछु we are following auditing standards बुझिला जदी financial reporting करछु international financial reporting standards हम follow करछु ना नै तो everything must be based on माने जहां भी तमे करछो that must be backed up by some legal regulations जहां भी जदी ताकर framework specially mention हेची तो से framework ता तुमको follow करियाडा दरकार then से कोछ कोन care should be taken to avoid purchasing quantities in excess of requirement to avoid inventory carrying cost
जेतिकी दरकार सेतिकी परचेस हबो देन से कहछ कोन ऑफर शुड बी इनवाइटेड थ्रू अ फेयर ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल प्रोसीजर हला जहां भी तुम ऑफर्स दोचो सेउडा कोन फेयर ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल प्रोसीजर माने नै कि तुम जा जा चिन्ह ताको खाली फोन करी कहि दोचो तुम जल्दी कोड कर दियो अली कहि कि आ बाकी जन को लेट रे कहजो एउडा हबनी फेयर समस्त को फेयर ट्रीटमेंट देबार अछि ट्रांसपेरेंसी रहयार अछि समस्त को जते इंफॉर्मेशन आमे देबार अछि सेडा देबा आ तांकर जति पायर अछि से जिंस पाए आमे जति कि देबा से जिंस रे लुचा लुची नै से पर्सन को जहां भी लुचा लुची न करलाळिया कोन आमे एनकरेज करिबार अछि देन रीजनेबल प्रोसीजर माने कोन लॉ जदी कहिछि तमे जनरल ऑफरटा ए प्रोसीजर रे दबो तमे गोटे कोटेशन करिवो पैम्पलेट सब जगह कोन ट्रांसपेरेंटली सेटा डिक्लेयर करिवो जदी इमिति प्रोसीजर कुहाइछि तो से प्रोसीजरटा बाध्य होइगी फॉलो करि क्लियर then the procuring authority should be satisfied that the selected offer adequately meets the requirement in all respects procuring authority माने कोन जो अथॉरिटी को मॉनिटाइज करछि माने मॉनिटर करछि से अथॉरिटी सैटिस्फाई हबार अछि कि आमे जहां भी कंडीशंस अछि से कंडीशंस फॉलो करछु ना नै ठीक अछि The procuring authority should satisfy itself that the price of the selected offer is reasonable and consistent with the quality required. जहां भी हमर क्वालिटी अछि ताको धरि कि जदि हमर प्राइस ता अछि सेटा कोन रीजनेबल एंड कंसिस्टेंट अछि माने कोन रीजनेबल इन द सेंस माने जे भी किनु चंदी तांको आडर सेटा रीजनेबल अछि आ आम आडर सेटा कंसिस्टेंट अछि माने एते भी नै कि हम लॉस रे पळेबो एते भी नै कि हमको अधिक प्रॉफिट हे जिवो बियार एटा ब्रेक इवन और समवॉट ग्रेटर देन ब्रेक इवन ताको लागिबर अछि कागो ना प्रोक्यूरिंग अथॉरिटी को लागिबर अछि At each stage of procurement, the concerned procuring authority must place on record in precise terms the consideration which made by taking the procurement of decision. माने से कौन कहूची जहां भी सब स्टेज ऑफ प्रोक्योरमेंट रे कौन होची रिकॉर्ड थिबार अछि टर्म्स एंड कंडीशंस जहां भी अछि कंसीडरेशन केते रिसीव करछो केते के टर्म्स अछि आ वेटेज केते के गोटे गोटे कथार सब जिंसर इन डिटेल रिकॉर्ड ता पाखरे थिबार अछि a complete schedule of the procurement cycle complete schedule मु कहथि शेड्यूल ला का परे कोडा हबो of from date of issuing the tender to date of issuing the contract should be published तर टेंडर टा इश्यू होची टेंडर टा डिक्लेयर होची डेट ऑफ इश्यूइंग द टेंडर टा केबे इश्यू हला डेट ऑफ इश्यूइंग द कॉन्ट्रैक्ट टा केबे इश्यू हला तीरा जे जिंसर ये करियर अछि इंट्रोडक्शन करियर अछि all the ministries or departments shall prepare annual procurement plan कोन करी annual procurement plan माने टोटली गोटे शेड्यूल बनै देलु एबे बनै कोन पूरा वर्ष पे गोटे शेड्यूल माने इंडिविजुअली मंथ वाइज शेड्यूल हमें बनै सारू बुझला एबे करिए कोन पूरा ईयर पे कोन शेड्यूल हे पारे क्लियर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर एटा केते हबो ना ईयर टा स्टार्ट हेबा आगरे फाइनेंशियली गोटे ईयर टा स्टार्ट हेबा आगरे पूरा ईयर पे गोटे प्लान टा हबो अकॉर्डिंग टू द टेंडर दे आर टेकिंग ठीक अछि and same should be placed on their website एटा कोडी प्लेस हबो वेबसाइट रे प्लेस हबो Also, Rule 145 lays down the provisions relating to the authorities competent to purchase goods. Provisions relating to authorities. किए एटा goods purchase करि परियो कार हमें goods purchase करि परियो किए हमर goods purchase करि परियो दीडा जको जिंसर कोन प्रोविजन उडा को सेक्शन 145 रे मेंशन हिच An authority which is competent to incur expenditure may sanction the purchase of goods required for use in public service in accordance with the provisions in Delegation of Financial Power Rules following the general procedure contained in the following rules. बुझिला जहां किछि भी रूल्स मेंशन हेची सेडा को धरि की अथॉरिटी गोटे एमिति प्राइस मेंशन करियर अछि जोटा की रीजनेबल रहइबो समस्तंगर पॉइंट ऑफ व्यू रो क्लियर आई होप इट्स क्लियर नेक्स्ट क्लास रे हमें कंसीडर करिया कोन स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जोटा की बेसी इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट चैप्टर हला ठीक अछि थैंक यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब